So namaskar all of you. आज आम नेक्स्ट पार्ट को जीवा बेसिक फाउंडेशन रे आम देखथलु एविडेंस कोन आउ किछिटा बेसिक कांसेप्ट्स हम लास्ट क्लास रे देखथलु एविडेंस ऊपर ओके आज क्लास रे आम टाइप्स ऑफ एविडेंस देखिबा किबा काइंड्स ऑफ एविडेंस देखिबा ओके जदि आपन जन के पचरिबो केते प्रकार एविडेंस अछि ताले आपन कोन आंसर करिवे ओके Sir, we did not get a last class video. हाँ लास्ट क्लास वीडियोटा संडे दिन आपनकर अपलोड हबो आज आउ काली रो सब माने संडे पर्यंत जो वीडियो गुड़ा संडे रे अपलोड हबो जे एक्चुअली जे आईटी पिलाटा जे सब से अपलोडिंग करिका करे से बे लीव रे अछि से संडे दिन जॉइन करिवो तो संडे दिन आपनकर सब गुड़ा संडे पर्यंत जहा जहा क्लासेस थिबो संडे दिन अपलोड हबो ओके तो एबे Sir. फॉर द टाइम बिंग आपण लाइव ही क्लास करंतु ओके आज तो थर्सडे हैला फ्राइडे सैटरडे आउ 2 डेज संडे रात रे से अपलोड कर दो Yes, sir. ओके सो Yes, sir. I did not attend last class, so I asked. अच्छा लास्ट क्लास अटेंड कर नटले अच्छा मु कहि दउ Yes, छी बेसिक लास्ट क्लास रे हम खाली एविडेंस कोन सेटा ता ऊपर बेसिकली फोकस करथलु व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस ठीक अछि हिस्ट्री रा टिके देखथलु कि हमर एविडेंस लॉ उडा I इंडिया रे saw in day I saw notebook, and I did not get a video, so I asked. हाँ नोट टा आपनकर सेथरे देखिते सेटा ही पढाइतला मेनली हिस्ट्री ऑफ आपनकर एंशिएंट इंडिया बेले माने हिंदू रूलर्स जेतल थिले मेडिवल इंडिया बेले मुस्लिम रूलर्स जेतल थिले तापरे यूरोपियंस माने जेतल आसले सेतबेले हमर लॉ ऑफ एविडेंस इंडिया रे केमिति आस्ते आस्ते चेंज होला सेई गुडा सब हम देखथिलु फंडामेंटल जिंस केतेटा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट करिका सेडा देखथिलु आज हम देखिबा केते प्रकार आपन को एविडेंस अछि ओके तो टाइप्स ऑफ एविडेंस की काइंड्स ऑफ एविडेंस आपन कोइ परिबे Sir, I saw it in Telegram, but I did not get in evidence textbook. मिलन से ये I want ठीक to अछि read, sir. I want to read. Already I ordered, but in Amazon, but need 2-3 days. So. अच्छा ठीक अछि मते क्लास पर व्हाट्सएप करिवे मु पठेइ देबी तार ठीक अछि सर Please, sir, kindly you send. आगे आगे सो आज हम बेसिकली डिस्कस करिवा टाइप्स ऑफ एविडेंस ऊपर ओके केते प्रकार रो आपनकर एविडेंस टाइप अछि राइट तो किछिटा तो डायरेक्टली हमें स्टैट्यूट रु पाई जाउछु जेमति कि ओरल हे गला डॉक्यूमेंटरी हे गला मेनली स्टैट्यूट्स करिका सेही तरह ही डिफरेंशिएट करंती बट वेरियस अदर टाइप्स सब टाइप्स भी आपण डिवाइड करि पारे ओके तो एटा पॉइंट वाइज लिखंदो एटा हमें जनरली बुझुछु concept of types of evidence we are not getting into the sections and all जोड़ा कि जेतले हमें बेयर एक्ट रु पढिबा कि सेक्शनल एनालिसिस करिबा सेतबेले हमें सेक्शन बाय सेक्शन जिबा तो प्रथम एविडेंस टा जोड़ा कि क्वाइट ऑब्वियस इंडियन एविडेंस एक्ट रे भी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे भी जोड़ा को बहुत इंपोर्टेंस दिया हिची सेटा हला आपनकर ओरल एविडेंस ओके सो ओरल एविडेंस सेटा जनरली डायरेक्ट हबा कथा इट इज अ वेरी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस ओके डायरेक्ट हबा माने कोन जिहार कहिबा कथा जे विटनेस अछि सीए निजे कहिबो ठीक अछि तो सीए का थ्रू रे कहबोनी ओके आउ सेम कि नै कि आपण रास्ता ऊपर कहबो ठीक अछि किबा लेट्स से आपण गोटे कॉफी शॉप रे कहबो से कोर्ट रे कहबो सेटा ठीक अछि तेनो किए कहउची आ कोठी कहउची सेटा मैटर करे ओके तो फर्स्ट आपण लिखंतु नंबर 1 टाइप्स ऑफ एविडेंस ओके आउ से थरे नंबर 1 ओरल एविडेंस लिखो ओरल एविडेंस सब थर 2-3 लाइन हमें लिखिबा गोटे एविडेंस गोटे एग्जांपल नबा ओके आ तार फंडामेंटल फीचर्स कोन से गुडा देखिबा ओके तो फर्स्ट हैला
कौन ना काहाको आपण ओरल एविडेंस कहउचंती जो विटनेस रहउचंती से माने कोर्ट सामने रे जा टेस्टिमोनी तांकर दउचंती ओके जोटा कि से तांको सेंस रु परसीव करचंती ठीक अछि सो निजो सेंस रु परसीव करिया कथा आपनकर जो सेंसेस अछि आखिरु आपण देखुचंती नोज रु आपण ओके स्मेल करि पाउचंती कानरु शुणुचंती ओके तो सेमती स्किन रु आपण फील करूचंती सो परसेप्शन आपण निजे परसीव करिया कथा ना कि आपण फ्रेंड आपण को से देखितिला कि सुनतिला ओके और सी आपण कहले आपण सेटा निजे आपण परसीव करनांती किंतु सेटा आपण एविडेंस हिसाब रे दवा पे आछे सेटा भी गोटे हियर से एविडेंस टाइप रो हिजिवो हियर से माने मु निजे परसीव करनी आउ जने परसीव कहिति कि से परसीव करछि से मते कहला मु आसी कि कोर्ट रे एविडेंस दोछि तो कोर्ट सेटा जनरली ओके एडमिसिबल नुह सेटा एक्सेप्शंस अछि जोडा में जेतबळे जिबा एक्सेप्शंस टू हियर से एविडेंस को सेतबळे देखिबा हैला त लेखंतु एटा oral evidence generally means oral evidence generally means testimony of a witness oral evidence generally means testimony of a witness testimony of a witness who has directly seen directly what underline karon who has directly seen heard or perceived something relevant who has directly seen heard or perceived something relevant directly Sir, underline perceives. करिए हाँ perceived 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 सेंस करि Perceive. पारले परसेप्शन आसला तांकर राइट Sir, perceive करे. समथिंग रेलेवेंट perceived something relevant ओके perceived something relevant तो एई लाइन रे आपण डायरेक्टली टा अंडरलाइन करंतु आउ रेलेवेंट टा अंडरलाइन करंतु ओके से निजे देखिथिबा सुनिथिबा स्मेल करथिबा फील करथिबा जा भी हेले निजे सेटा परसीव करथिबा दरकार ओके ओरल एविडेंस रे आउ जहा भी परसीव करथिबे सेटा केस जो विषय ऊपर चली जाको टेक्निकली आपण फैक्ट इन इश्यू कहउछन ओके तो से फैक्ट इन इश्यू संगे कनेक्टेड थिबा दरकार रेलेवेंट थिबा दरकार ठीक अछि तो सपोज गोटे रॉबरी हिची संडे दिन हैला संडे दिन रॉबरी हिची सकाळ 6:30 बेले तो मु 6टा रु उठी मो नेबर रो घरे रॉबरी हिची मु 6टा रु 8टा बालकनी रे सबळे बसे से दिन भी बसथिली ठीक अछि तो मु देखिली एई टाइप रो कारटा आसिला और लोक बाहरले व्हाटएवर सेटा हम कहि परि ता घर गले सेटा रेलेवेंट रहला ओके बट मु जदी एई कथा कहबी कि मु संध्या बेले बसथिली ओके संध्या बेले 4टा बेले बसथिली आउ सेते बेले मु देखिली गोटे कारटे आसिला आउ कि जने ओलेला बट रॉबरी सकाळे हिच ओके तो एई केस रे मु जो सेकंड जिंसडा कहूची मु संध्या बेले बसी कि देखथुली कि आस्ती न आस्ती सेटा रेलेवेंट न ही पर बुझ परले तेनु दीटा जिंस इंपोर्टेंट एथरे से डायरेक्टली परसीव करथिबे आउ जहाँ भी से तांकर टेस्टिमनी दउचंती सेटा रेलेवेंट हेइथिबा दरकार केस को ओके नेक्स्ट पॉइंट देखंतु एटा फर्स्ट पॉइंट 1 ओरल एविडेंस पॉइंट 1 सेकंड हला इट मस्ट बी डायरेक्ट माने से जे देखिची कि सुनिची कि फील करिची सीए निजे आसी कहबो हला आउ कोठी नो कोर्ट रे आसी कहबो सो इट मस्ट बी डायरेक्ट and presented in court what do you mean by presented in court सामने रे फिजिकल प्रेजेंस तार न हेले भी चलिबो किंतु कोर्ट प्रोसीडिंग रे प्रेजेंट करिवो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू रे कोठी दूर रे बसी कि तार ओके ओरल एविडेंस ता दोउची टेस्टिमोनी ता दोउची एक्सेप्टेबल किंतु का सामने रे दोउची कोर्ट को सामने रे दोउची ओके एमति नै कि ता फ्रेंड संगे रे कथा होची कॉफी शॉप रे तो ताको आपण कहबे सेटा हला ओरल एविडेंस ओके नो
It has to be presented in a court. May not be physically. Court रे जाइकी ठिया हिथिबो witness box रे दरकार नहीं. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे ता घरु भी करि पारे कि अलगा को जगह रू भी करते. Okay, with obviously with the leave of the court. एबे कोन होची? virtual court. हाँ वर्चुअल कोर्ट सेमती है ठीक अच्छे एबे तो गवर्नमेंट ताको लोअर कोर्ट लोअर जुडिशियरी रे भी सेटा इंप्लीमेंट करिया पे बसचंदी अब एबे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रे आपण मेनली देखुचंदी बट लोअर कोर्ट से भी ओके गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऑलरेडी से माने चेष्टा करूँ ता पई ह्यूज आपणकर मैन पावर भी दरकार नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी दरकार किंतु जदि लोअर कोर्ट से भी सही व्यवस्था हे जिवो ताले बहुत लोकंकर सुविधा ओके सो एनीवे जब भी हो तेणु कैरेक्टरिस्टिक्स विथ द सेकंड पॉइंट रे अपन लिखिले इट मस्ट बी डायरेक्ट को अंडरलाइन कले एंड प्रेजेंटेड इन कोर्ट टा अंडरलाइन करे दैट मींस इट हैज टू बी गिवन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ओके नॉट टू सम अदर पर्सन नॉट टू यू नो योर फ्रेंड्स कि आ कोटी रास्ता रे अपन को कहउचंती नहीं ओके सो एग्जांपल अपन को ओरल एविडेंस रो जहाँ भी अपन दे परिबे तो टेक डाउन एग्जांपल a witness testifying Yes, second point रे. नहीं example लेटर example of oral evidence a आगे witness testifying seeing the accused fire a gun witness testifying seeing the accused fire a gun hello witness देखी जी कि accused गोली चली okay he has shot seeing the right accused. seeing the accused fire a gun okay गोली मारुची सेटा से देखी छी सेटा से कोर्ट सामने रे कहूची so a witness testifying seeing the accused fire a gun आगे ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଓରାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ତାର ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ पर्टिकुलर सेक्शन को ଯିବା जोठी की बोथ हमर इंडियन एविडेंस एक्ट आउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिजन जाको बेसिकली से माने जो डिवाइड करचंती एविडेंस को ओरल एविडेंस आउ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ओके तो एटा गला ओरल एविडेंस नंबर 2 सेकंड लिखंतु डॉक्यूमेंटरी एविडेंस second documentary evidence so obviously documentary evidence कौन सी गोटे डॉक्यूमेंट आपण कोर्ट रे प्रोड्यूस करचंती गोटे फैक्ट को प्रूफ करिया पे ठीक अछि सेटा हैला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस सेथरे आपनकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सरिका भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंडर रे सेटा भी इंक्लूडेड अछि ओके तेनु सेटा रिटन हे परिबो प्रिंटेड हे परिबो ओके इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हे परिबो प्रिंटेड और रिटन रो बहुत फॉर्म्स अछि जेमति आपण कहउचंती लिथोग्राफ हे परिबो ओके मेटल प्लेट्स हे परिबो आगो कालो जेमति मेटल ऊपर लेखा होतला ठीक अछि तेनु कोनोसी गोटे सरफेस ऊपर जदि किछि इम्प्रिंट कराई कि लेखा होची ओके ताको आपण डॉक्यूमेंट बोली भाबुचन राइट सो दैट इज डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ओके तो लेखंतु सेटा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस फर्स्ट पॉइंट एनी डॉक्यूमेंट produced to prove a fact any document produced to prove a fact any document produced to prove a fact second point it includes written printed and electronic material it includes written printed and electronic material
Sir, please author. It includes. It includes written, printed, or electronic material. Written, printed, or electronic material. आरो जहाँ भी अपन इच्छा गोटे एग्जांपल दे परिबे जेतु बीएसए रे हमें ओके डिजिटल रिकॉर्ड्स विषय रे बेसी कथा होचु तो हमें गोटे डिजिटल रिकॉर्ड रो एग्जांपल दे परिबा ओके सो टेक डाउन acknowledgement of income tax return, acknowledgement of income tax return signed digitally, acknowledgement of income tax return. Sir, example. हाँ example देता acknowledgement of income tax return signed digitally by a competent income tax officer, signed digitally by a competent income tax officer. आपण ऑनलाइन रे निजर इनकम टैक्स रिटर्न टा भरिले ठीक अछि तापर ताकू से एक्नॉलेज करले से एक्नॉलेजमेंट रे फिजिकल सिग्नेचर नहीं डिजिटल सिग्नेचर अछि ठीक अछि तो दैट इज ए डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ठीक अछि तो बिकॉज सेतरे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल अपन ताकू कहि परिबे स्कैन्ड कि प्रिंटेड पेपर रे अछि सेटा बट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अछि पीडीएफ रे अछि कि वर्ड रे अछि जो गोटे फॉर्म रे अछि गोटे इमेज फॉर्म रे अछि आउ सेठी जो सिग्नेचर टा हेची ऑफिसर रो सेटा आपनकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टा हेची डिजिटल सिग्नेचर टा हेची ओके तो सेटा भी गोटे डॉक्यूमेंट हबो सेटा को आपण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बोली ताको अलगा किछि बाहर कर देबे कि नहीं ये गोटे अलगा टाइप रो एविडेंस ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस is a separate evidence but under BSA ताकू डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हिसाब रे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट हिसाब रे निया हिची ओके सो सेमिति जा नॉर्मली आगुरु जा हमर सब होतिला फॉर एग्जांपल आपनकर एग्रीमेंट्स एबे डिजिटल एग्रीमेंट्स होची ओके आगुरु जोड़ा पेपर रे होतिला एबे आपण साइन भी डिजिटली करछन and they are all just like the pen and paper agreements okay so थोड़ा सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा right so documentary evidence है आपनकर सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस आउ कोन हमें डिवाइड कर परिबा आउ हला कि से एविडेंस रा नेचर को नहीं whether it is a primary kind of evidence or a secondary kind of evidence okay so take down primary evidence primary evidence so take down प्राइमरी एविडेंस कौन तो जो डॉक्यूमेंट विषय आपण कहउचंती सेटा को आपण ओके प्राइमरी एविडेंस हिसाब रे ताको नउचन ओके आउ दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ एविडेंस ठीक है सपोज आपण ओटे चेक टे पकेजन चेक बाउंस हो गला व्हाटएवर रीजन पे टेक्निकल रीजन हो कि आपण को इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो कोर्ट रेटले केस आसीबो तो कोर्ट जनरली एक्सपेक्ट करिवे से बाउंस चेक रा ओरिजिनल टा ओके ओरिजिनल ऑफ दैट ओरिजिनल बाउंस चेक तो सेटा हला प्राइमरी एविडेंस ओके तो फर्स्ट पॉइंट लिखंतु प्राइमरी एविडेंस रे इट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ it is the original document itself
Next point. It is considered by the court. It is considered by the court. It is considered by the court as the best and most preferred form of evidence. It is considered by the court as the best and most preferred form of evidence. Next class से हमें गोटे पढ़िबा गोटे concept कि आगो classes से हमें पढ़िबा best evidence rule. ठीक है, best evidence rule. Most preferred Form, FORM, most preferred form, FORM. Okay. Next point, example गोटे देबे. Original check. Original check. So example, original check submitted in check bounce case. Original check submitted in check bounce case. Okay. तो जदि प्राइमरी एविडेंस रहिबो ताले तार ऑपोजिट रे आपण सेकेंडरी एविडेंस भी देखिबे, राइट? सो नेक्स्ट हला सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस टी बुझे दे. प्राइमरी एविडेंस माने जो डॉक्यूमेंट ता आपण कहउचंती ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ता ताको आपण प्राइमरी एविडेंस कहउचंती. आ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे सेथरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड अछि, राइट? सो सपोज आपण इनकम टैक्स रिटर्न ता फाइल कले, आपण गोटे एक्नॉलेजमेंट आसिला जोटा पीडीएफ फॉर्म रे अछि, आपण मेल को आसिला कि हां आपण एई आईपी एड्रेस रु अमुक दिन रे एतिकी समय रे आपण इनकम टैक्स रिटर्न ता भरिचंती, एटा हला तार एक्नॉलेजमेंट. ओके, ताको तापरे डिटेल प्रोसेसिंग कराई कि जदि आपण ठीक ठाक अछि देन यू विल गेट अनदर एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस जहा भी सेटा हला. किछि दिन पर 2 मास कि 3 मास पर आपण गोटे नोटिस आउछि कि आपण आपणकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करि नाहंती, राइट? तेणु आपण कोन देखेबे से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ता आस्थिला आपणकर पीडीएफ फाइल ता सेडा देखेबे हां मु करिछि एटा हला एक्नॉलेजमेंट मते पठाइछि. से जो एक्नॉलेजमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईमेल रे आपण को पठाइतिला सेटा ए केस रे आपणकर प्राइमरी एविडेंस. ओके, because it shows that income tax department received your income tax return and they have issued you an acknowledgement सेतर नंबर पके की डेट टाइम दे की से माने इशू करिछन. ओके, एनी डॉक्यूमेंट तार ओरिजिनल फॉर्म रे सेटा हैला प्राइमरी एविडेंस. ओके, चेक बाउंस केस रे सर एटा प्राइमरी एविडेंस टा तुमने जो क्रिमिनल केस रे बोते किछ रिक्वायरमेंट नाही. कहीं की रिक्वायरमेंट नहीं. चेक बाउंस तो यू नो तार तो क्रिमिनल इम्प्लिकेशन हबो ना. ठीक अछि, जणे जदि मोर पाखरे पैसा ही नहीं मो अकाउंट रे मु चेक लिखि देली लाख टंकार चेक बाउंस हे गला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड अदर एक्ट्स भी एबे तार अछि आउ स्ट्रिंजेंट लॉज अंडर रे. ओके, तो यू नो मो अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस भी प्रेस करी होबो. ठीक अछि, नॉर्मली हुए नहीं बट चिल्ड्रन किछि पेनल्टीज की किछि ये पड़िबो. बट ओके, सब जगह से जो भी केस रे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ता जेतले आपण दोउचंती सेटा हैला प्राइमरी एविडेंस. आगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ता आगे तार लेट्स से फॉर एग्जांपल ओडे जनरल सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कोची ए किल्स हिज ब्रदर बी हैला. प्राइमरी मोटिव कोन जणा पडुची, मोटिव ए जणा पडुची कि तांकर जो फादर को प्रॉपर्टी बहुत प्रॉपर्टी अछि. ओके, आ विल रे बी को 70% शेयर तांको फादर कर देथिले. ओके, कि जदि बी रो डेथ हे जिवो ताले 100% ए को जिवो, नहले बी 70% नबो ए 30% नबो. एटा ता फादर विल करी कि जायथिले तांकर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. सो ए से हिसाब रे बी को एलिमिनेट कर देला, ता भाई की मार देला. ठीक अछि, एई जेतले ए जिंस आसीबो तो एठी प्राइमरी एविडेंस हिसाब रे से विल टा जो रजिस्टर्ड विल टा that will be a primary evidence, original of that will.
बुझिपारे तो एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जोटा रेलेवेंट अच्छी से केस पई सेटा आपण प्राइमरी एविडेंस कहउछन एंड एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम electronic documents, electronic records, digital records, they also form a part of primary evidence. एटा major difference थिला Indian Evidence Act आउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स परिका इंडियन एविडेंस एक्ट रे ताकू सेकेंडरी टाइप रो एविडेंस बोली कंसीडर करा जाउतला एबे एटा प्राइमरी एविडेंस हिसाब रे कंसीडर करा जाउ कि डॉक्यूमेंट अंडर रे ही ताकू रखाई जाइछि भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे ओके बुझी पारले प्राइमरी एविडेंस ता कोन Yes, sir. ओके तो प्राइमरी एविडेंस जदि देखिले ताले ऑब्वियसली तारो काउंटर पार्ट रहइबो सेकेंडरी एविडेंस ओके तो एटा जदि ओरिजिनल ताले सेकेंडरी एविडेंस माने तारो कॉपी तारो डुप्लीकेट तारो जेरॉक्स ओके ओ हजि गला मोर रजिस्टर्ड विल हज जाइछ किंतु ता कॉपी अछि ओके रजिस्टर विल जदि रजिस्टर ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାର କପି ଅଛି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାର କରି ପାରିବି ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଯାଇ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ଗୋଟେ सर्टिफाइड कॉपी ठीक अछि तो से सब आपनकर सेकेंडरी एविडेंस रे जीवो दे आर बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स फॉर द ओरिजिनल ओके और द प्राइमरी एविडेंस तेणु सर्टिफाइड कॉपीज हे पारे ओके किंबा ओरल अकाउंट्स भी हे पारे ओरल अकाउंट्स माने कोन जीए से डॉक्यूमेंट ता बनैतिला ठीक अछि किंबा जीए से कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ता भलरे देखिचन जानि जदि से डॉक्यूमेंट रे कोन लेखा हितिला से माने आसी की कोर्ट रे कहि परिबे कि हां से डॉक्यूमेंट ता मु बनैतिली आउ सेथरे एआई मु लिखितिली कि एआई लेखा हितिला किंबा यदि से बनै भी नांती किंतु ताको देखि जंती से आसी की से कहि परिबे हां एट से डॉक्यूमेंट रे कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एआई थिला ठीक है तेणु whatever may be the case these are basically secondary evidence माने substitute for the original or the primary evidence it may be in documentary form like copies or it may be oral account of the content ठीक है अच्छा कोर्ट किंतु ए सेकेंडरी एविडेंस को एते भल पांती ठीक अछि प्राइमरी एविडेंस जदि मिलुची ताले सब बेले सेटा दैट इज प्रेफर्ड बाय द कोर्ट किंतु बहुत केसेस अछि जोटी प्राइमरी एविडेंस मिलिबन ओके लॉस्ट डिस्ट्रॉयड ओके अनट्रेसेबल बहुत दिन होई पर सही जगह रे कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट करिवे बुझि परले सो सब बेले प्राइमरी एविडेंस ता बेस्ट आउ प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ एविडेंस ओके सो लेखन ताले सेकेंडरी एविडेंस टेक डाउन secondary evidence are substitutes for the original secondary evidence are substitutes for the original are substitutes for the original like copies or oral accounts like copies or oral accounts कार से डॉक्यूमेंट रे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रे कोन लेखा हितिला तार ओरल अकाउंट ओके लाइक कॉपीज और ओरल अकाउंट्स नेक्स्ट पॉइंट they are admissible only under specific conditions they are admissible only under specific conditions they are admissible under specific conditions for example original document मिलुनी destroyed हो जाइची untraceable हो जाइची ओके जहाँ भी damaged हो जाइची ओके आउ भी बहुत गुड़े कंडीशंस अच्छी सेथरे ही जाएंगी
ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ को अलाउ करिवे एडमिट करिवे ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु तर एक एग्जांपल देखिबा तो टेक डाउन एग्जांपल फोटोकॉपी की जेरॉक्स कॉपी एक्चुअली ताको इंग्लिश रे टेक्निकली फोटोकॉपी कहले जेरॉक्स इज एक्चुअली ए कंपनी ठीक अछि बट से कंपनी टा कोन हिची ना दैट हैज बिकम सिनोनिमस विथ फोटोकॉपी कहना जोटी देखियो से कंपनी टा तेनु दुकान करी करी भी हमें फोटोकॉपी शॉप जदी अपन लिखियो अधा लोग बुझी परिबेनी कि से कोन अछि जेरॉक्स लिखिले समझते जिबे ओके बट तारा एक्चुअल इंग्लिश है इट इज अ फोटोकॉपी जेरॉक्स इज ए कंपनी ओके तो सेटा माइंड रखे सो फोटोकॉपी ऑफ ए लॉस्ट विल ओटे विल जदी रजिस्टर कराई कि न रजिस्टर करके सेटा हजि गला ओके तो तार फोटोकॉपी अछि तो सेटा को सेकेंडरी एविडेंस हिसाब रे कोर्ट नहीं पारि ओके सो सेटा हला आपनकर example of secondary evidence many other examples you can take okay जोटा कि original document in lieu of the original document or substitute of original document okay तो एटा हला secondary evidence next आसिला real or material evidence okay सेकेंडरी एविडेंस रो एग्जांपल कोन कहले xerox copy कोनोसी गोटे original रो xerox copy जेमति कि हमें लिखिलु xerox copy of a lost will ओके कि फोटोकॉपी ऑफ ए लॉस्ट विल गोटे विल ओरिजिनल विल टा हजि जाइछ पड़ी जाइछ रेस्ट रहि जाइछ ओके तार फोटोकॉपी टा अछि तो सेटा सेकेंडरी एविडेंस एग्जांपल फोटोकॉपी ऑफ ए लॉस्ट विल एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रो फोटोकॉपी तापरे नेक्स्ट टाइप रो एविडेंस लिखंतु रियल और मटेरियल एविडेंस रियल और मटेरियल एविडेंस रियल और मटेरियल एविडेंस रियल और मटेरियल एविडेंस मटेरियल एविडेंस माने कोन फिजिकल एविडेंस जोटा आपण टच करि परिबे ओके आउ जोटा कोर्ट रे प्रोड्यूस हेतिबो राइट तो से तार लाभ कोन कोर्ट ताको डायरेक्टली एग्जामिन कर देबे ठीक अछि गोटे मर्डर हेछि मर्डर रो वेपन टा सेटा आपण कोर्ट सामने रे प्रेजेंट करछन दैट इज अ फिजिकल एविडेंस सेटा गोटे रियल की मटेरियल एविडेंस छुरी छुरी रे मर्डर करछि छुरीटा मिल जाइछि गन रे मर्डर करछि गनटा मिल जाइछि ठीक अछि सो दीज आर रियल और मटेरियल एविडेंस जोटा कि फिजिकल एविडेंस टा आपण कोर्ट रे ताकू प्रेजेंट करूछन आ कोर्ट ताकू एग्जामिन डायरेक्टली करि परिबे ओके सो फर्स्ट पॉइंट लिखंतु these are physical objects produced in court these are physical objects these are physical objects produced in court produced in court these are physical objects produced in court second point likhantu they can be examined by the court directly they can be examined by the court directly okay next point example nontu murder weapon recovered from crime scene murder weapon recovered from crime scene जो बंदूक रे गोली मारथिला से बंदूक रे मिलिची मर्डर वेपन रिकवर्ड फ्रॉम क्राइम सीन
ओके किंबा किछि भी जिंस जोड़ा क्राइम रे यूज हला ए पर्टिकुलर केस रे आ जोड़ा की क्राइम सीन रो कि से पाखा पाखा एरिया रो रिकवर हिच से गुड़ा हला रियल और मटेरियल एविडेंस फिजिकल एविडेंस जोड़ा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ओके तो एटा हला रियल और मटेरियल एविडेंस तापरे नेक्स्ट अच्छा एविडेंस टा आपण को को फॉर्म रे मिली एविडेंस टा डायरेक्ट एविडेंस मिली किंबा circumstantial evidence मिली okay as the name suggests direct evidence किछि inference दरकार नहीं okay how it is the strongest evidence right ओडा जणे के कन्फेशन करूची मैजिस्ट्रेट को सामने रे ठीक अछि किंबा गोटे सीसीटीवी फुटेज गोटे क्राइम रो पूरा कमिशन ऑफ द क्राइम से फुटेज रे जणा पड़छ ओके तो सेथरे आपण जान पाउछंती कि कोन हेची कोन नै पूरा क्लियर अछि सेटा किछि इन्फरेंस तार दरकार नै ओके बट जोटी सेमती डायरेक्ट एविडेंस नहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अछि ओके आउ सेथरे इन्फरेंस दरकार राइट ताकू टिके आउरी एक्सपर्ट्स माने कि जे भी हो ताकू टिके भलरे बतेबा दरकार इन्फरेंस आपण ड्रॉ करिवे सेथरो डायरेक्ट एविडेंस नो से गोडा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ठीक अछि जेतले मर्डर हैला तार 2 मिनिट परे गोटे आई विटनेस से अक्यूज को से एरिया रु बाहरी वाला देखिला गाड़ी रे ठीक अछि ये डायरेक्ट एविडेंस कने ताको देखिनी से मारला बेले किंतु 2 मिनिट परे से बाहरु थिला देखि बुझि पाल सो फोन लोकेशन तार कोठी थिला ओके तो एई टाइप रो जिंसो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हिसाब सपोज से 1 किलोमीटर रेडियस रे जोटी क्राइम ही थी अक्यूज्ड रो फोन लोकेशन आसु तमे एटा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आगु को हमें पढिबा कोरोबोरेटिव फॉर्म रे एटा यूज हुए केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऊपर कन्विक्शन होबा भारी बुझी कष्ट पालिनी सर्कमस्टांस एविडेंस टा कोन कहले बुझी पालिनी सर्कमस्टांस एविडेंस टा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माने आपण सीधा गोटी एग्जांपल रो बुझंतु जणे आई विटनेस देखिला ए बी को गुली मारुछ पूरा देखि जी से ओके ए गुली मारला बी की बी रो डेथ हे गला ठीक अछि सो एथरे कोन ना एथरे किछि इन्फरेंस दरकारी नहीं से कोर्ट रे से कहबो सीधा ये आकु गोली मारले ये आंको डेथ हे गला ठीक अछि बट सीए से जिंस रे तो एटा आपन को डायरेक्ट एविडेंस रे गला आगे ओके किना गोटे कन्फेशन हैला ठीक अछि गोटे लोकटे गोटे अक्यूज्ड तार क्राइम को कन्फेस करूची मैजिस्ट्रेट को सामने रे ठीक अछि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोन ए देखिनी कि आई विटनेस देखिनी कि ए बी की मारुछ किंतु सेही पॉइंट रु ओके 2-3 मिनिट परे माने मर्डर हबा परे किंबा से गोटे लाउड बैंग सुनला ओके माने गोटे गुली रो शब्द सुनला जेतले से बाहरी की आसला ता घरु तो मिस्टर ए तळे पडचंदी ओके आउ मिस्टर बी दूर दूर जाउछन बट ही डिड नॉट सी मिस्टर बी शूटिंग और किलिंग ए सेटा हला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डायरेक्टली देखिनी ना से कोन कहबो से कहबो गोटे गोटे लाउड बैंग हैला मु घरु बाहरला आसी कि से जने पडिची जने दौड़ी की जाउछ किंतु मु देखिनी कि से ताको मारची बोल ओके तो सर्कमस्टेंसेस को बाटो को पॉइंट करूछन राइट सेटा हला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सर्कमस्टेंस माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमस्टेंस ऑफ ए केस सेही केस रो पाखा पाखी ओके कौन कौन सब घटी से टाइम रे ओके व्हाट वाज द स्टेट ऑफ दैट प्लेस एंड ऑल दिस थिंग्स से गुडा आपण सर्कमस्टेंस हिसाब रे कहउछन सो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हला गोटे इनडायरेक्ट एविडेंस आउ सेटा डायरेक्टली कोर्ट ताको धरि की ओके आपण को सजा दे परिबेन
ठीक अच्छे कन्विक्शन कर पारे तार इट रिक्वायर्स इनफरेन्स ओके जड़े गुली शुणिला घर बाहर को आसला देखिला गोटे लोक पड़ी आ गोटे लोक दौड़ी जाऊँगी एबे आउरी तार कौन प्रूफ मिल पार सो दैट कोर्ट इनफर करिवे कि ये दौड़ी जाऊला से गुली मार्च ओके सो दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस दैट इज इनडायरेक्ट एविडेंस ओके सपोज गोटे मर्डर वेपन मिलला सेतरे तीनटा सेट फिंगरप्रिंट अछि there are three sets of fingerprints on a weapon ओके आउ तीनटा को सेगमेंटाइज करिकी अलग अलग करिकी ता प्रोफाइलिंग रु जणा पड़िबो को तीनटा लोकंगर से फिंगरप्रिंट आउ अक्यूज ता भितरु जणे कि नहीं तो एथरे कोन इन्फरेंस दरकार जोटे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट आसीकी सेडा चेक करिकी कहि परिबो ठीक अछि तो इन्फरेंस सेठी दरकार होची इट रिक्वायर्स इन्फरेंस आउ जणे लोक आसी कोर्ट को हेल्प करिवे ओके बुझी पारले डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रो डिफरेंस ता आज्ञा सो फर्स्ट टेक डाउन डायरेक्ट एविडेंस फर्स्ट पॉइंट लिखंतु it proves the fact in issue it proves the fact in issue without requiring inference it proves the fact in issue without requiring inference excellent okay लिखिले proves आज्ञा the fact in issue without requiring inference माने बुझछन तो कोर्ट को आउ कहार हेल्प दरकार नहीं एटा पूरा डायरेक्ट कोर्ट देखुचंदी सीसीटीवी रे जणे आसुची जण को गुली मारी की पडुची ता मुह क्लियर अछि आ मुह क्लियर अछि आउ किछि आउ तापरे कोर्ट खाली ऑथेंटिसिटी देखुचंदी सीसीटीवी टा टेम्पर हेनी तो जे एक्सपर्ट अछंदी सी तांगर सर्टिफिकेट दे दोचंदी सीसीटीवी टेम्पर हेनी सेटा पूरा ऑथेंटिक क्लिप अछि ओके तो सेटा आज्ञा आसीगला आपको डायरेक्ट एविडेंस आउ कहार सेतरे कोर्ट को हेल्प नवा दरकार नहीं क्लियर अछि कि ये तांकू मारुचंदी ओके सो एंड दिस इज द स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल एविडेंस कोडा डायरेक्ट एविडेंस तो नेक्स्ट पॉइंट लेखंतु it is the strongest form of evidence it is the strongest form of evidence it is the strongest form of evidence आज्ञा एग्जांपल नहीं जानतु सीसीटीवी फुटेज ऑफ क्राइम ठीक अछि सीसीटीवी फुटेज ऑफ क्राइम बैंक रॉबरी होची मर्डर हैला एक्सीडेंट हैला जहा भी हैला तारो सीसीटीवी फुटेज ओके सीसीटीवी फुटेज क्राइम एग्जांपल रे आसीबो सीसीटीवी फुटेज ऑफ क्राइम एटा हैला डायरेक्ट एविडेंस तापरे नेक्स्ट टेक डाउन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो लाइक हमें डिसाइड डिस्कस कलु कि एगुडा इनडायरेक्ट एविडेंस गुडा आ पई इन्फरेंस दरकार ओके सो फर्स्ट पॉइंट देखंतु it is indirect evidence it is indirect evidence and requires inference it is indirect evidence and requires inference आज्ञा
No, sir. Next point, it must form a complete chain of events. It must form a complete chain of events. Circumstantial evidence, circumstances गुड़ा କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଳରେ ଆପଣ ବିଡ୍ସ ବସଉଛନ୍ତି, ଓକେ, ଯୋଉ ଜପ କରନ୍ତି ଏମିତି, ସେମିତି ତାର ପୁରା ଚେନ୍ ହବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ରହିବା ଦରକାର. It must form complete. It must form a complete chain of events. It must form a complete chain, CHAIN, chain of events. ओके, जेमती कि आमे जो केसटा डिस्कस करथुलु सेटा नियंतु तार कोन ना मिस्टर ए मिस्टर बी की कहितले मु आजि आपनको पैसाटा देबी. मिस्टर ए ओबी मीट कले. ओके, मिस्टर ए कहले कि नहीं मु अरेंज करि परलिनी पैसा देई परनी. मिस्टर बी रागी गले, ताका पाखे गन थिला, गनटा बाहर करी कि ताको शूट कर दे. शूट कला परे तो सेते बेले जे सुनिला विटनेस जे से साउंडटा सुनला किंतु देखिनी, से बाहरी की आसला घर से ये दौड़ी की पड़ौले. ठीक अच्छे, दौड़ी की पड़ेला परे से जाइकी कोठी गोटे तांकर वेपन टाको फोपाड़ी देले. जोटा पुलिस रिकवर कला परे आउ तापरे तांको घर को पळेले. घर को जाइकी तांको वाशिंग मशीन रे तांकर जो गुली मारथिले ब्लड फ्लड पड़ जायतला शेड ऊपर, तो सेगुडा सब ताको ताको दोइले आउ वाशिंग मशीन रे भी तार स्टेन्स लाग गला. तो ये सब जिंस गोटे गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे मिसिला परे आपनकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलुछ आपन, कारण डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं. ओके, सेमिति केही नाहंती कि जे देखिचंती कि मिस्टर ए को मिस्टर बी गुली मार देले, किंतु एई जो सब फैक्ट्स किंबा आको हम सीक्वेंस कहि परिबा, एई जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आपण एका संगे मिसई देले गोटे चेन टे फॉर्म होउछ, जो थरे जणा पडुची काहे कि ओके मिस्टर बी मिस्टर ए को मार देले. कोठू स्टार्ट हैला पर्टिकुलर जिंसटा आउ कोठी एंड हैला, ताको मीटिंग रू स्टार्ट हैला आउ सी जेकी ता घरे तांकर वाशिंग मशीन रे तांकर ब्लड स्टेन्ड ड्रेस उडा ताको सफा कले सेठी एंड हैला. बुझ पाले, ए चेन टा पूरा जदी प्रूफ करि देबे ओके, ताहले चांसेस ऑफ ए कन्विक्शन इंक्रीजेस. ठीक अछि, दैट मींस एटा चेन रूल गोटे द it is a requirement in circumstantial evidence that there must not be any gap. ठीक अछि, it must form a complete chain of events. Next point, तारा example लेखंतु, multiple fingerprints on murder weapon. Multiple fingerprints on murder weapon. अच्छा, ए multiple fingerprints माने कोन, से घंटा बहुत जण धरछन दंत तीनटा सेट फिंगरप्रिंट्स मिलिला. मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स ऑन मर्डर वेपन. ताले एटा किए बे डिसाइड करिवो कि जे अक्यूज्ड अछि तार फिंगरप्रिंट अछि कि नै सेतरे. सम एक्सपर्ट हैज टू बी देयर. ओके, जे की फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट थिबे, से सेपरेट करिवे तीनटा सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स एंड तापरे मैच करिवे कि अक्यूज्ड ऑफ फिंगरप्रिंट मैच करछि कि नै से तीनटा सेट भितर गोटे भितर. ओके, सो ता माने कोन, कोर्ट को हेल्प दरकार हो एथरे. इट रिक्वायर्स इन्फरेंस. ओके, so these are circumstantial evidence. They are indirect evidence and they require inference. बुझी पारले डायरेक्ट एविडेंस आउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रो डिफरेंस. फर्स्ट रे जोटा मु कहितली कि मु गोटे जिंस देखिनी कि सुनिनी, बट मु रेस्टोरेंट रे तळे खाउतली मो फ्रेंड संगे रे, सी कहला अरे जानचु काली सपोज हमें गोटिए सोसाइटी रे रहू, तो काली रात रे मु जल्दी सोई पड़ती, बट मो फ्रेंड से चाहिला, से देखिला कि गोटे कोन गोटे हेची गोटे सोसाइटी रे. ओके, एमती जने आसिला, जने बाडेला काउ कोन, से मते डिस्क्राइब कला पूरा जिंसटा, से देखिथिला मु देखिनी. ओके, एबे मु पहुंची गली कोर्ट रे, मु कहूची हम मु सुनी छी मो फ्रेंड कहला कि हेकला. ओके, तो सेटा कोन हला, हियर से एविडेंस. आई हैव हर्ड माय फ्रेंड सेइंग इट टू मी. हियर से मु निजे देखिनी किंबा निजे मो सेंसेस द्वारा परसीव करिनी, ना निजे देखिची ना निजे सुनिची. ओके, ना निजे फील करिची, मते कि ओडे कहिची. ओके, मते कि ओडे कहिची, सेटा मु ता कथा को
ଶୁଣିକି ସେଟା ଯଦି ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କହିବେ, that is hearsay evidence. Okay, so hearsay evidence is not admissible, okay, in court, inadmissible सेटा, except certain exceptions which are there. एटा गोटे क्वेश्चन जदि आपण जुडिशियल सर्विस में प्रिपेयर करछथि, ए क्वेश्चन टा बहुत तरह पड़े. Okay, what are the exceptions to hearsay? Okay, hearsay rule of hearsay evidence रो exceptions कौन? ता माने जणे गोटे जिंस देखिनी कि निजे परसीव करिनी, तथापि तार विटनेस टा, तथापि तार स्टेटमेंट टाकू आमे प्रूफ भलिया मानुछु. ओके, तो सेमिति एक्सेप्शनल सिचुएशंस किछटा अछि, राइट? तो लेखो hearsay evidence, hearsay evidence, hearsay evidence. First point, information not directly perceived by the witness. Information not directly perceived by the witness. Information not directly perceived by the witness. ठीक है. Next point, generally inadmissible in court, generally inadmissible in court unless exception applies. Unless exception applies. Like dying declaration. Unless exception applies, like dying declaration. ओके, तो माने कौन ना, जदि विटनेस निजे जिनसटा देखिनी, सुनिनी, स्मेल करिनी, फील करिनी, निजे परसीव करिनी, निज सेंसेस रे परसीव करिनी, ताकू के कहि जंती से सुनिची सेटा, तो सेटा हैला हियरसे एविडेंस. सेटा जनरली तार एविडेंशियरी वैल्यू ओ केतेटा एडमिसिबल हबनी कोर्ट रे. किछिटा एक्सेप्शन अछि. गोटे कॉमन एक्सेप्शन हैला आपन डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन अर्थ कोन, जो लोकटा मरिया पई जाउछि कि एटलीस्ट ताकू लागुछि कि मु मरिया पई जाउछि. ओके, ताकू कि असॉल्ट कर देला कि कोन एक्सीडेंट हे जाइछि कोन, आ सेई टाइम रे से गोटे स्टेटमेंट दोछि कि किछि कहूछि का, जाको भी कहि पारे, पुलिस की कहि पारे, मैजिस्ट्रेट को कहि पारे, ओके, आओ डॉक्टर को कहि पारे, किंबा गोटे कॉमन लोक जे रास्ता रे जाउथिला ताकू भी कहि पारे. ओके, सेठी कोर्ट एया देखुचंती कि जेतले तार लास्ट मोमेंट से रियलाइज करूची कि एटा मोर लास्ट मोमेंट, आफ्टर दिस आई विल बी डेड, तेनु ता मुहरे प्राय सत कथाटा रहिबो. काहेकि ना कि गोटे मिछ कहि कि सीधा जाई कि भगवान की परमात्मा संगे ओके मीट करिया पे चाहिबोनी. तेनु कोर्ट जनरली बिलीव्स ओके दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज ट्रू. ओके, तो से कहूची कि मते ये मार देछि, मते जहा भी से कहला, राइट? तो डाइंग डिक्लेरेशन रो ओके एविडेंशियरी वैल्यू अछि. ओके, आउ बहुत गुडे केसेस रे ओनली बेस्ड ऑन डाइंग डिक्लेरेशन ओके कन्विक्शंस हेछि. बट देन देयर आर वेरियस रूल्स फॉर दैट आल्सो. जते बळे हमें सेही पार्टटा देखिबा, ओके, डाइंग डिक्लेरेशन को जिबा, सेते बळे हमें पढिबा कोर्ट कोन सब, सुप्रीम कोर्ट कोन सब टेस्ट रखिचंती कि डाइंग डिक्लेरेशन को बेस करिकि आपण कन्विक्शन करि परिबे. ओके, सो एटा गोटे एक्सेप्शन टू हियरसे, सेमति अलग भी एक्सेप्शंस अछि, बुझ पारले? सो नॉर्मली इट इज इनएडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ unless there are some exceptions. Okay, any example you can take hearsay evidence ro, जेमति मु कहली कि मोर फ्रेंड मते कहले कि से देखिले गोटे चोरी हिच, मु देखिनी कि मु सुननी कि मु मोर सेंस रो परसीव करिनी, मो फ्रेंड मते कहले, तो मु जाई कि कोर्ट रे एटा कहि परिनी मो फ्रेंड मते कहले कि गोटे चोरीटे एमति हितला. ओके, so this is hearsay evidence. So
एग्जांपल रे अपन लिखि परिबे A says within quotation B told me that C committed murder. A A says is A says okay within quotation B told me that C committed a murder. B told me that C committed a murder. तो ए निजे देखिनी सेटा ता कहया कथा कि बी ताको कहितला कि सी गोटे मर्डर करछि C ओके committed murder. हां कमिटेड ए मर्डर ए सेज quotation B told me C committed a murder Yes. तो ए निजे देखिनी से कहछि कि बी मते कहितले कि सी गोटे C मर्डर married. करछि सेटा कोर्ट रे एडमिसिबल हबनी बिकॉज़ इट इज हियरसे एविडेंस ओके नेक्स्ट टाइप रो एविडेंस देखंतु जोटा कि बहुत प्राधान्य दिया इंपोर्टेंस दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ओके Yes. It have been इलेक्ट्रॉनिक one. नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आपण फिजिकल एविडेंस किबा रियल एविडेंस मटेरियल एविडेंस लिखिथिले तार माने ता अगेंस्ट हैला इटा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस Okay. okay it cannot be presented in a physical form in the court ठीक अछि the storage device धरंतु गोटे सीसीटीवी फुटेज अछि सेटा कोठी स्टोर हेतिबो गोटे हार्ड डिस्क रे स्टोर हेतिबो से हार्ड डिस्क ता फिजिकल जिंसडा सेटा आनी कि आपण कोर्ट रे देखि दी परिबे किंतु जो एविडेंस ता स्टोर हेति दैट एक्चुअल रिकॉर्डिंग सेटा ओके storage device रे स्टोर हेति but still it will be electronic okay किबा गोटे ईमेल से ईमेल ता आपण लैपटॉप रे अछि कि आपण फोन रे अछि ठीक अछि तो फोन किबा आपण लैपटॉप सेटा स्टोरेज डिवाइस ता ओके ईमेल पर but से email in itself that is electronic evidence बुझि पारले तेणु electronic evidence take down it includes digital records and electronic communication it includes digital records and electronic communications it includes digital records and electronic communications Okay. okay next point likhundu it is admissible under specific procedural rules it is admissible under specific procedural rules specific procedural rules Sure. okay visible so the अर्थ कौन admissible under specific procedural rules ता माने ए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रो एडमिसिबिलिटी को नै की किछिटा रूल्स कराई सो दैट सेटा टेम्पर हे नथिबो किंबा सेटा किछि करप्ट हे नथिबो ओके तारो इंटीग्रिटी टा ठीक थिबो जेतेबेले कोर्ट ताको एडमिट करिवे सेतिबे ता पई किछिटा प्रोसीजर रखाई छै ओके सेटा से कहू इट इज एडमिसिबल अंडर स्पेसिफिक प्रोसीजरल रूल्स ओके तो एग्जांपल अपन नहीं परिबे व्हाट्सएप कन्वर्सेशन ईमेल कन्वर्सेशन ओके इन एनी क्राइम साइबर फ्रॉड
So WhatsApp screenshots ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ସୋ କିମ୍ବା ଇମେଲ ଟ୍ରେଲଟା ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଯିବ। ଓକେ, ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖନ୍ତୁ, WhatsApp chats, WhatsApp chats or email conversations in cyber fraud. WhatsApp chats or email conversation or email conversation in cyber fraud. In cyber fraud. ओके, तो एटा हैला इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बुझ पाले। अच्छा, आउ कोन, आउ टिके कोन कहि पारे हमें, टिके नॉन फॉर्मल की इनफॉर्मल लेवल रे देखिले, ठीक अछि, बहुत गुड एविडेंस हमर अलगा भी 300 पय यूज हुए। ओके, सपोज मो घरे आइसक्रीम आनी की रखाई छी, राइट, मत आइसक्रीम खाया कथा नुह, बट समस्ते सोला रात रे मु आइसक्रीम खाई देली, ठीक अछि। सो एबे कथाटा है कि सकाळे जेतले अन्य उठले से देखले आइसक्रीम नहीं, तो सब मो ऊपर ही आसिला क्वेश्चन टा कि आपण आइसक्रीम खाई देछंती बोधे, राइट, आ कोन की एविडेंस, तो एविडेंस भीतर सपोज मोर पुओ की झियो से देखी कि रात रे मो आइसक्रीम खाउते, राइट, तो से कहउछन हां पापा आइसक्रीम खाइछन, राइट, तो एटा कोन हबो ना, एटा ऑब्वियसली कोर्ट सामने तो एविडेंस दिया होनी, क्योंकि जहाँ भी हेले सेटा एविडेंस, तो एगुड़ा हेगला नॉन जुडिशियल एविडेंस, ठीक है। सो यू आर separating or discriminating between judicial evidence and non judicial evidence. Okay, जो एविडेंस रा कोर्ट रे रिकॉर्ड होउनी सेटा नॉन जुडिशियल एविडेंस, ठीक है। सो टेक डाउन नॉन जुडिशियल एविडेंस, नॉन जुडिशियल एविडेंस, नॉन जुडिशियल एविडेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखंतु, statements made outside the court, statement made outside the court but relevant in court. Outside the court or Statements made outside the court but relevant in court. Okay, suppose गोटे केस टे हबो, ओके, कि आइसक्रीम के खाइला, ताले ऑब्वियसली ए स्टेटमेंट गुडा रेलेवेंट हबो, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, these are not recorded under oath. Non judicial evidence is not recorded under oath. जेते आपण स्कूल रे आपणकर मन थिबो, स्कूल रे बहुत टाइम रे प्रिंसिपल डाकी पचारिबे एटा किए कला से कला, ओके। फॉर एग्जांपल मो स्कूल रे एमती थिला कि गोटे टाइम रे बहुत यू नो पारादीप रे पढुथिले, तो सेठी कॉन्वेंट स्कूल रे हमर, तो सेठी हमर जे प्रिंसिपल थिले नन सिस्टर थिले, सीए थरे कहले कि बहुत टाइफॉइड एंड ऑल बहुत होतला से टाइम रे, कि गुपचुप कहीं खाइबेनी, आ सब जी देखिबो कि हमर स्कूल पिला गुपचुप खाउछन्ती आसी प्रिंसिपल की वाइस प्रिंसिपल को कहबो, ठीक अछि। तो भोजन जाई कहती ये खाइले से खाइले से खाइले, तो ताको सब डका हबो, ओके, तो जे देखथिबो से भी आसी कहबो हां ये काली खाउतले देखछि, राइट। सो एटी कोन होछि ना, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर ओथ बट दे आर स्टिल ओके एविडेंस, बुझि पारले, तो बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर ओथ, ओथ माने ओथ ऑफ द कोर्ट, ओके। again sir, second point actually these are non recorded, Not recorded under oath, not these recorded are on record.
under oath. Oath माने देखो Under आमे oath. केते गुडे कॉन्सेप्ट्स पढिबा. सपोज मु कोर्ट रे ओथ नै छी जा कहबी सत्य कहबी और मिछ कहूची ताले कोन हबो. ओके मो ऊपर केस हबो कि मु अंडर ओथ आई हैव लाइड अंडर ओथ. राइट. तो किंतु ए नॉन जुडिशियल एविडेंस रे एटा तो कोर्ट को दिया होनी ना एविडेंस ता तेनो एटी Again. ओथ नै आइनी. सो दीज Again. आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर ओथ. ओके. Again. सो एगुडा हैला नॉन जुडिशियल एविडेंस. इवन टिके सीरियस पॉइंट रे भी कहले नॉन जुडिशियल एविडेंस रो आउ भी गोटे बहुत बड़ एग्जांपल आसीबो आपनकर कन्फेशन मेड इन फ्रंट ऑफ पुलिस. ओके. आपण यदि पुलिस सामने रे किछि कन्फेशन करूचंदी जहा भी कहउचंदी सेटा नॉन जुडिशियल एविडेंस. सेटा कोर्ट रे ओके कोर्ट ताकू कंसीडर करिवेनी अनलेस यू you know say the same thing in front of the court or in front of a magistrate. Okay. So example, confessions made before police. ताले जदि सेटा नॉन जुडिशियल एविडेंस होची तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस हैला जुडिशियल एविडेंस. Sir, जो example टा एविडेंस एग्जांपल हैला confession made before police. Confession made before police. So suppose police आपन को गोटे थेफ्ट पई अरेस्ट कर देछि. ओके. आउ आपन को आपन मानि जाउचंती पुलिस सामने रे कि हां मु मोबाइल टा चोरी करछि. ठीक अछि. तो सेटा हैला कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस. तार वैल्यू सेमती किछि नाही कोर्ट रे. खाली जा कोरोबोरेटिव से भी जदि आपण किछि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तांको दउचंती कि हां मु मोबाइल टा चोरी की तापर नै कि एठी रखि देछि तो सी ताको डिस्कवर करी रिकवर करिवे से तो ता पई सेटा दरकार हबो. किंतु तार एक्चुअल एविडेंशियरी वैल्यू कोर्ट रे किछि नाही. ओके. मु जदि कहउची हां मु कन्फेस करछि पुलिस सामने रे कि मु मोबाइल टा चोरी छि. ओके. अनलेस मु सेम जिंसटा कोर्ट रे कहबी जने मैजिस्ट्रेट को सामने रे कोर्ट तार ओके कोर्ट विल नॉट बिलीव दैट व्हाटएवर आई हैव टोल्ड द पुलिस. तेतने अपन देखिबे जते सब क्रिमिनल्स की बदमाश सब थांती तांको एडवोकेट्स माने तांको से कहि के रखतांती कि जहा पुलिस पचारिबो जेमती पचारिबो जस्ट से यस व्हाटएवर दे से यस. आ कोर्ट को गले से माने या कहि दियंती कि मते जोर जबरदस्ती करतिले काहे कि ना मु पुलिस सामने रे जहा भी कहिछि सेडा कोर्ट कंसीडर करिवे. कुछ पहले. So judicial evidence next judicial evidence take down. Evidence given in course of legal proceedings. Evidence given in the course of evidence given in the course of ଏଟା କୋଉଥିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନନ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ତ ସରିଲା. এটা জুডিশিয়াল এভিডেন্স. নন জুডিশিয়াল এভিডেন্স ର ଆମେ ଅପୋଜିଟ ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ନୁହଁ ବଟ୍ ଯଦି ନନ୍ ଜୁଡିଶିଆଲ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଜୁଡିଶିଆଲ ଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ. ରାଇଟ୍. ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଜୁଡିଶିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ. ଆଜ୍ଞା. ଓକେ. ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଜୁଡିଶିଆଲ ମଝିରେ ଟିକେ ଶୁଭୁନି. ଆଜ୍ଞା. evidence given in course of legal proceedings. Evidence given in course of legal proceedings. Okay. Evidence given in course of legal proceedings. Next point लिखंदो. Judicial evidence is recorded by the court. Judicial evidence is recorded by the court. ଆଜ୍ଞା. एग्जांपल तापर अपन दे परिबे जहा भी जहा माने
कोर्ट सामने जहाँ भी एविडेंस दिया होची सपोज विटनेस ओके तार टेस्टिमोनी दउची कोर्ट सामने रे सो एग्जांपल लिखंतु विटनेस डिस्पोजिशन ड्यूरिंग ट्रायल example witness disposition during trial witness disposition during trial okay next point लिखंतु next type testimonial evidence testimonial evidence टेस्टिमोनी हमें प्रथम क्लास से देखिलु टेस्टिमोनी माने कोन जहा विटनेस कहूची ओके सेटा को टेस्टिमोनी को जाय सो टेस्टिमोनियल एविडेंस विटनेस कोर्ट सामने जा ମାନେ କଣ? टेस्टिमोनियल माने टेस्टिमोनी हैला जो विटनेस आपनकर कोर्ट सामने रे जहा स्टेटमेंट ता दउची तार एविडेंस ता दउची मु एया देखिथिली मु एया देखि नथिली कोर्ट को कहूची सेटा से राइट सेटा हैला टेस्टिमोनी तो सही एविडेंस को अपन टेस्टिमोनियल एविडेंस कहउछन whatever the witness is saying to the court whatever statements the witness has given to the court that is testimonial evidence हैला तो फर्स्ट पॉइंट देखंतु statements made by witnesses during proceedings statements made by witnesses during proceedings statements made by witnesses during proceedings. Next point. They must relate to facts in issue or relevant facts. They must relate to facts in issue or relevant facts. तो अर्थ कौन फैक्ट इन इश्यू माने जोड़ा कि सेंट्रल फैक्ट है जा ऊपर केसटा हिची ओके सो फैक्ट इन इश्यू ता रिलेटेड तार टेस्टिमोनी थिबो विटनेस तारी विषय किछि कहउथिबो सपोज मर्डर केस हिची ओके द फैक्ट इन इश्यू इज वेदर ए हैज किल्ड बी ओके तार कहया कथा हम देखि छी ए बी की मार्च ठीक अछि तो सेटा फैक्ट इन इश्यू किंबा किछुटा रेलेवेंट फैक्ट ओके बी को जो मारी थी जो मर्डर ही जो वेपन टा सेम वेपन टा सही सीरियल नंबर रा ये मो दुकान रु किनथिला रेलेवेंट फैक्ट ओके तो सेटा से दुकानी जाई कहूची कि सही बंदूकटा मो दुकान रु ये लोग किनथिला सेम सीरियल नंबर वाला ठीक अछि सो इट मस्ट रिलेट टू फैक्ट्स इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स टेस्टिमोनियल एविडेंस okay so example eyewitness testimony in crime any criminal case murder ho theft ho robbery ho eyewitness testimony जे देखि जियो जिनसोडा होची okay तो example लिखंदु eyewitness testimony in criminal cases eyewitness testimony in criminal cases ओके तापर नेक्स्ट टाइप रो एविडेंस लिखंतु एक्सपर्ट एविडेंस तो से जो हियर से एविडेंस मु कहतिल ना तार एक्सेप्शन गोटे कहतिली कोन डाइंग डिक्लेरेशन ओके जो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन और एक्सपर्ट एविडेंस
ओके एटा भी काना सी तो देखि नांती ना सी कोन परसीव करचंदी तांकर सेंसेस रे ना किंतु तांकर नॉलेज अछि से डोमेन रे सेथि पई से जहा कहउचंदी कोर्ट सेटा सुनिबे इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट कोर्ट मानिया पे बाध्य नुह किंतु सेटा सुनिबे एक्सपर्ट कोन कहउचंदी सो एक्सपर्ट एविडेंस फर्स्ट पॉइंट लिखंदु it is opinion by a person having specialized knowledge it is opinion by a person having specialized knowledge it is opinion by a person having specialized knowledge next point it is advisory and not binding on the court it is advisory तामाने से एक्सपर्ट कहबो कि हां ये एटा एई टाइप रो हितिबो बहुत प्रोबेबिलिटी अछि एई करथिबे ठीक अछि एडवाइजरी इट इज एडवाइस टू द कोर्ट कि एमती हेई पारे कि एया जनरली हुए ओके कोर्ट एटा एक्सेप्ट करि परिबे रिजेक्ट भी कर दे पारे कोर्ट को लागियो नै ये कोन कहउचंती एटा ओके ठीक ठाक लागुनी जिंस ठीक अछि आपण एक्सपर्ट ओपिनियन थैंक यू फॉर योर ओपिनियन बट हमें से ओपिनियन को नबोनी ओके कोर्ट पूरा श्योर न होला पर्यंत कन्विक्शन करिबन ओके तेनु it is advisory in nature and not binding on the court it is advisory in nature and not binding on the court and not binding on the court example handwriting analysis in a will dispute handwriting analysis in a will dispute तो जे handwriting expert ताको दिया हबो गोटे पार्टी कहउची will रे जो सिग्नेचर अछि सेटा फॉर्ज्ड अछि ओके तो कोर्ट डाकिबे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को कि से जो सिग्नेचर कराई छी सेटा फॉर्ज्ड अछि ना सेटा ठीक अछि तो सी तांकर जा देखि कि कहिबे तांकर ओके तांकर एक्सपर्ट ओपिनियन देबे कि एटा फॉर्ज्ड अछि कि एटा ओरिजिनल सिग्नेचर ता ओके दैट then court has to decide court जदी ताको लागिला कि हां हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जा कहउचंदी ठीक अछि आउ अदर सर्कमस्टेंसेस आल्सो पॉइंट टू वन पर्टिकुलर वे ताले सेटा से एक्सेप्ट करिवे नहले कोर्ट ऊपरे एक्सपर्ट ओपिनियन बाइंडिंग नो ठीक अछि कोर्ट कैन टेक कंप्लीटली रिवर्स पोजीशन आल्सो एक्सपर्ट ओपिनियन कहउची एटा ठीक अछि बट कोर्ट कहबे नै हमें ताको ओके मानुचु कि एटा ठीक न ही पारे राइट तो कोर्ट ऊपरे सेमति किछि यू नो किछि मैंडेटरी तांको ऊपरे प्रोविजन नाही कि एक्सपर्ट जहा कहिबे कोर्ट को सेया करिया पे पड़ियो राइट सो एग्जांपल handwriting analysis in a will dispute okay तापरे next hostile evidence Handwriting analysis in a will will dispute वसीयत again. ठीक है hostile evidence माने सर कोन hostile माने कोन opposite of friend फ्रेंडली रो ऑपोजिट हैला hostile माने कोन ना आपण जण को डाकी जंदी आपण को पक्ष रे से साक्षी देबे ठीक अछि सो सपोज आपण कहउछनी मु किछि करनी ए लोकटा देखि छी मु किछि करनी ताको डाकी जंदी आपण सी आपण को फेवर रे साक्षी देबा कथा कि आगे सतरे ये किछि करनांती सी उल्टी गला से सेठी कहउची नै एही ही करचंदी ये ही नै चंदी कि जहा भी आपण केस थिबो चोरी रो कि जहा भी मर्डर रो एही मर्डर करचंदी कि एही चोरी कर ओके ता माने सी जहा जिए ताको डाकी छी ता सपक्ष रे साक्षी देबा ये उल्टाटा जस्ट करची दैट इज हॉस्टाइल एविडेंस ओके फर्स्ट पॉइंट लिखंतु टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस testimony of a hostile witness भी कहती testimony of a witness who turns against the party testimony of a witness who turns against the party who called them
testimony of a witness who turns against the party who called them. Second point, the witness may be cross-examined. The witness may be cross-examined by the calling party. The witness may be cross-examined by the calling party. Example, witness retracting, retracting, witness retracting statement in murder case. Witness retracting statement in murder case. ता अर्थ कौन रिट्रैक्टिंग माने कौन से प्रथमे कहला मु देखि जी ये लोक मर्डर करची तापर प्रेशर पड़ला कि कौन हैला ताको के धमकी हैला जाबी से परे ताको आसी कहूची मु चिन्हि परनी से जो लोकटा जे एक्चुअली मारथिला मे बी ए लोक न होई पारे से दिन मु चश्मा पिन नथली मोर एबे मने पड़नी से हजार प्रकार कथा कहबो ठीक अछि किबा स्टेट मना ही कहदो ना ए लोकटा ही नथला ये ए लोक मारनी आगुरु किंतु कहिदे ए लोक मारची एबे से तार स्टेटमेंट रो रिट्रैक्ट करि जाउछ पलटी जाउछ ए लोक मारनी कि मु देखिनी जा भी रिट्रैक्शन कोच ओके सो एग्जांपल witness retracting statement in murder case ओके तापरे नेक्स्ट हैला आपनकर आउ दीटा रहला corroborative evidence ओके corroborative evidence corroborative evidence CARRO CORROBORATIV corroborative evidence it is the evidence that supports or strengthens other evidence it is the evidence okay just a minute I'll be back in 1 minute again sir okay corroborative evidence ଆମେ ଦେଖୁଲୁ so it is the evidence that supports or strengthens other evidence it is the evidence that supports or strengthens other evidence next point it is not sufficient alone it is not sufficient alone but adds credibility it is not sufficient alone but adds credibility अर्थ कौन ना सेटा निजे ऊपर कन्विक्शन करि परिबनी किंतु अलगा एविडेंस को सपोर्ट करिकी गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे कोर्ट को डिसीजन टा को नहीं परिबो ओके सो
corroborative evidence माने कौन जेमती कि आपण खाइला बेले आपण साइड डिश मगाउछन आपण मेन डिश रहउची फ्लेवर टा सेटा ही दउची ओके मेन जिनसटा बट ता सहित साइड डिश भी रहउची जोटा आपणकर एक्सपीरियंस फूड एक्सपीरियंस को खाइबा को आउरी बेटर बनाउछ तो एठी भी corroborative evidence रो काम से कि जो मेन एविडेंस आपणकर रहिला सेही एविडेंस को corroborative evidence उडा ओके सपोर्ट करिवो सो दैट कोर्ट गोटे पर्टिकुलर डिसीजन रे पहुंची पारिबो किंतु जदि मेन एविडेंस आपण काढी देबे ताले corroborative evidence किछि काम रनु ओके केवल corroborative evidence को नहीं कि आपण कन्विक्शन करि परिबेन ओके एग्जांपल देखंतु मेडिकल रिपोर्ट supporting survivors testimony medical report supporting survivors testimony ଗୋଟେ accident ହେଇଛି ସେ survive କରିଗଲା सी ତାର ତାପରେ କହୁଛି କି ଏମିତି ଏମିତି ଏ ହେଇଥିଲା ओके और मेडिकल रिपोर्ट रे भी एग्जैक्टली सेम जिंस को आउट मेडिकल रिपोर्ट सपोर्टिंग सर्वाइवर्स टेस्टिमनी और लास्ट टाइप रो एविडेंस जो देखिबा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर एविडेंस कैरेक्टर एविडेंस तेणु जो लोक ओके अक्यूज अछि कि जा भी हो द पर्सन जा ऊपर फोकसटा अछि ता कैरेक्टर केमतिया ता रिलेटेड एविडेंस ओके सो टेक डाउन evidence relating to character of a person involved evidence relating to the character of a person involved evidence relating to the character of a person involved next point character evidence ta admissible ki nahi yes in certain cases it is admissible not in all cases so next point likhantu admissible under restrictions example previous good conduct used to reduce sentence previous good conduct used to reduce sentence suppose आपण ओटे दीटा सिनारियो नियंतु मिस्टर ए और मिस्टर बी ठीक अछि तो मिस्टर ए को कि ओटे आडू साडू कोन कहला मिस्टर ए कर किछि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नाही he is a normal person he is a stable person mentally sound financially stable but किए गोटे ताको आडू साडू कोन कहला से रागी की ता गोटे चटकणा मारले तार डेथ हे गला सपोज फॉर एग्जांपल ओके तो ताको ट्रायल हैला मर्डर पे ठीक अछि मिस्टर बी इज ए नोन क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर बहुत केसेस अछि ताको नारे से भी सेमती से रागरे गोटे आ गोटे लोक को सेमती जोरे चटकणा मारले से लोक भी डेथ हे गला ए लोक जे मिस्टर बी ताको नारे बहुत एमती केसेस चलती से ओके लॉट ऑफ केसेस आर देयर से जेल रे भी रही के आछंती राइट तो ए केस रे कोन होची ना कोर्ट देखुचंती कि इन केस ऑफ मिस्टर ए ताकर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नाही प्रीवियस कंडक्ट ताकर बहुत भलो अछि बहुत जण कहउचंती आसी तेनु तांकू जो बट ही हैज जा भी हो से ओके मारी चंती और लोकडे मर जाइछ ओके तो वेदर से मर्डर करचंती कल्पेबल होमिसाइड करचंती कि कोन जा भी से करचंती ठीक अछि सो तांकू टिके कम सेंटेंस दिया हो राइट so previous good conduct used to reduce sentence but Mr B who is a hardened criminal ताकू जहा normally जहा law रे अछि से हिसाब रे ताकू सेति कि maximum भी दिया ही पारे कुछ बोले तो so previous good conduct used to reduce sentence
Okay, so these are more or less the different types of evidence. सेमिति कहया गले हमें आउ छोट 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 डिफरेंस बाहर करिवि और भी बहुत फॉर्म्स ऑफ एविडेंस हमें बाहर कर पाबे. स्टैट्यूट केंतु डिवाइड करूची डॉक्यूमेंटरी और ओरल. ओके, सेतै मोस्ट ऑफ आवर बुक्स रे लिखा है टाइप्स ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस और ओरल एविडेंस. आ एगुडा सब तार आपण सब डिविजन्स बोली कहि परिबे. ओके, so today we went through the types of evidence. सबुरो गोटे गोटे एग्जांपल मन रखिबे ताले आपन सुविधा हबो. ओके, बुझि पाले? Any doubts in this? Then you can ask. No, Else we sir. will stop for today. No, sir, I have no doubt. Okay, fine. So we'll stop then. Thank you all. Yes, sir. Yes, sir. Sir, आपण ଟିକେ शेयर करिवे. एटा तो हां हां कोनटा कहले सेटा संडे दिन अपलोड हे जो आपन. नहीं नहीं सर, वो बहीटा मु ऑर्डर करिछि आसेनी ए जो बहीटा हां क्लास करे मते जो व्हाट्सएप कर दियंतु मो नंबर रे मु पठे दे. ओके, सर जोटा लास्ट को 910 से नंबरटा. हां हां सेटा 2210. आगे सर, थैंक यू. Thank you. Namaskar.